Good morning, children. Children, I have explained to you about pollination and different agents of pollination. Now, here I'm going to tell you about emasculation. So, what is emasculation? Emasculation is a process of removing anthers from bisexual flowers without affecting the female reproductive part, that is, without affecting pistil. Children, emasculation is basically done for artificial pollination. Artificial pollination means when you are choosing the desired characters and then performing the process of pollination, means when we are choosing the flowers of the desired characters, taking the pollen grains and transferring it to the stigma of the flower. So to avoid self pollination in bisexual flowers, suppose this is a bisexual flower, this is the anther and this is the stamen, this is the pistil. So to avoid self pollination, what we are going to do is I am going to cut this stamen and remove it from the flower. This is called as emasculation. Now whenever I will feel like I will stick the pollen grains of the desired flower, and then pollination is going to occur and then further fertilization will be there. Now this is how the process of emasculation is performed. You can see in this picture that anthers are removed from the parent plant, and after that the anthers are sticked to the stigma of this flower, that is dusting. Anthers, or we can say pollen grains, are dusted over the stigma. Then what is bagging? Children, as we remove the anther from the bisexual flower, what do? We cover the pistil with a plastic bag. We tie, or we can say we cover the flower with a plastic bag. So why this process is done? This process is done so that this stigma do not get contaminated with any other type of pollen grains or any other pollen grain. That's where we perform bagging. It is the protection of emasculated flower from contamination by undesirable pollen grains, because we have selected the characters and we have to transfer the pollen grains on that selected flower. That's why we cover that flower with a plastic bag so that we can avoid the contamination by any other pollen grain. So this was about emasculation and bagging. Now let us quickly revise what I have explained you here in this video. मैंने आपको बताया कि ये emasculation का प्रोसेस हम यूजुअली आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के केस में परफॉर्म करते हैं. आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉलिनेशन जो नेचुरली नहीं हो रहा है और हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से फ्लावर का एंथर विद इन अ स्पीशीज़ है, हम इसको अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो कौन से फ्लावर का एंथर हमें किस फ्लावर के स्टिग्मा पर लगाना है. तो ये क्या है, हमने डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चूज़ किए हैं कि हाँ इस वाले फ्लावर में ये कैरेक्टर है और हम इस कैरेक्टर, इसलिए इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है चूज़ करेंगे, और दूसरे वाले स्टिग्मा वाला जो फ्लावर है, फीमेल फ्लावर जो हम चूज़ कर रहे हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर ही हम चूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस फ्लावर में जो कैरेक्टर है उन दोनों कैरेक्टर्स को मिक्स करके हमें प्रोड्यूस करना है. करते क्या है, इस प्रोसेस में हम एंथर्स को रिमूव कर देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर से. उसमें हम फीमेल वर्ल्ड को टच भी नहीं करेंगे. एंथर्स को रिमूव करने का तरीका ये है, एंथर्स को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद उसमें दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को स्टिक कर देते हैं जो हम चाहते हैं. लेकिन ये करने से पहले हम बैगिंग कर देते हैं. बैगिंग का मतलब होता है कि हम उसको प्लास्टिक बैग से कवर कर दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने इमैस्कुलेटेड फ्लावर को, जिससे वो किसी और पॉलन ग्रेन से कंटामिनेट ना हो जाए. तो ये होता है हमारा इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. थैंक यू.